So, uh, hey, hi everyone. I hope you guys can hear me. Just acknowledge if you guys can hear me. And I can see a comment. Bharat is saying, please do DSA content videos. Uh, all right, Bharat. Yeah. So, for this, actually, we have been posting both the content videos as well as these kind of videos on a daily basis. We do have content videos as well. You can check them out. So you guys can check that out as well. But sure, I'll keep that in mind. And even I'm planning out to take more live videos on DSA content. I've talked to the team regarding this, so I'll make sure that this happens for the next time. So yeah, and please एक acknowledge कर दो that you guys can hear it. You guys can hear me. So and then we are going to start with the content. I do have a content, and it's a mixed content that you're going to this is not a personal content कि ये सिर्फ मेरी personal experience की वजह से नहीं है. This is what I've gathered from me, from my own experience, from my managers, from my mentors in company, while internship at Microsoft. So this is all what experience I've got, and I'm going to tell you what things are important to get into FAANG, or if you now say it MAANG. All right. So we are going to like wait for like 4 5 minutes, and then we are going to start with the content. And meanwhile, I'll introduce myself. Hi guys, I'm Naman Jain. I recently completed my fourth year from Punjab Engineering College as an electronics student, and I was a former intern at Microsoft, and I'll be joining as an SD at Microsoft this July. Abhi, uh, right after like a month, I'll be joining as a full-time software engineer at Microsoft. So, in regards to that, I'm going to tell you my opinions in as to how you can get into your favorite company, whether it be Facebook, Amazon, Apple, uh, Netflix, or Google. So we are going to like talk about important things regarding the process, how to get into it, how to start, when to do what. In terms of a short roadmap, I'm going to tell you a lot of things, and this is basically that we are going to discuss today. Let me just share it. Okay, just a sec. These are the basic points that we are going to discuss today. तो हम एक प्लान ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर वी आर गोइंग टू राइट start we are going to start with the resume building part, and after resume building part I'm going to tell you how to prepare for it कि preparation कैसे करना है. Then for working professionals, what kind of projects should be there, personal projects कैसे होने चाहिए, and af- after that what all computer science subjects are important or for interview rounds. And this is going to be whole the whole plan for today, the whole rollout plan for today, plan of action. इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं आज. So we'll start in a couple of more minutes, and yeah, so let's take a few comments. uh okay, so this is live, Abhijit. This is not pre-recorded. uh Vijay, I'll share my SD sheet. Don't worry, I'll do that. And how much time should one give to DSA ideally? So this question is absolutely personal. You should decide it on a personal level. Um, if you're gonna talk to me, I suggest this thing for even working professionals. For example, if like people who even go for senior software engineers, or even go for principal managers, they also require some kind of hands-on coding, right? So I think DSA is important for everyone. So I guess you should focus on it. All right. Can you please share the roadmap link? I don't get it. Yash, this is not a roadmap, and there's no kind of link
attached to it. So this is just deal it as just a normal dog. Kushal is asking, can Java be used for competitive programming? Yes, it absolutely can. We are please share now as my intern season is coming. So, all right, just for you, man. Okay, all right. So I'm going to share you this link. So I'm just attaching it in the chat. So make sure that you check it out. And this is my roadmap. Like how did I prepare? How did I learn DSA and I got into Microsoft? So Microsoft जाने का पूरा journey है इसके अंदर. And in the last you guys can find out the link. Just copy it and इसके end के अंदर you guys can just check it out. तुम्हें link मिल जाएगा for the SD sheet. हर्ष कह रहा है कि प्लीज अपलोड अपलोड द एसडी शीट. हर्ष मैंने लिंक शेयर किया है, जस्ट चेक आउट फ्रॉम द चैनल्स लिंक. चैनल के थ्रू जो कमेंट हुआ है उसके अंदर लिंक है, जस्ट ओपन इट अप एंड एंड के अंदर तुम लोगों को ये मिल जाएगा. सो आई थिंक वी हैव स्पेंड मोर टाइम ऑन दीज क्वेश्चंस एंड सो ऑन. सो आई थिंक दिस इज नाउ द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट how to get into FAANG and MAANG. All right, so I assume every single one of you wants to go into FAANG, wants to go into Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google. So, but if I tell you, like, honestly, even if you're good at DSA, even if you're totally good at coding, it's not necessary that you get into FAANG. So first thing before starting onto it, even if you have tried a lot for FAANG and MAANG and you're not able to crack it, please don't get demotivated. It's just a process. Everyone will pass through it. सबका हो जाएगा. Don't worry about it. ठीक है. It all depends on luck. बस the only thing that I require from each one of you is कि कभी इस path के अंदर ये जो journey है ना हमारी, starting from our internship and then going into our favorite company और बीच में कुछ intermediate companies के hops. ठीक है. This is in everyone's life. सबके life में होता है. For example, if I want to go to a more good company than Microsoft, तो मेरे लिए एक छोटा hop है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देयर समवन हु वर्क्स इन अ रीजनल कंपनी और फिर वो माइक्रोसॉफ्ट में जाता है तो उसके लिए वो हॉप्स है. सो देयर आर मल्टीपल हॉप्स टू गो इनटू योर फेवरेट कंपनी. सो नेवर एवर get demotivated. Just think about that, yeah, that this is your learning time and you're learning, and absolutely that is the motivation that you guys should have while going on through this uh, सेशन. राइट. तो इसके बाद हम प्लान ऑफ एक्शन के ऊपर बात करते हैं कि फैंग और मैंग के अंदर जाने के लिए हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या होना चाहिए. सो फॉर दैट इफ वी टॉक अबाउट फैंग एंड मैंग, मोस्ट ऑफ अस ट्राई टू अप्लाई इट ऑफलाइन. ठीक है. हम लोग ऑन कैंपस अप्लाई नहीं करते, वी अप्लाई इट ऑफ कैंपस. अब ऑफ कैंपस के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कम्स इज रिज्यूमे बिल्डिंग. एंड रिज्यूमे बिल्डिंग से पहले एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर लिंक्डइन. तो प्लीज मेक श्योर दैट यू अपडेट योर लिंक्डइन रेगुलरली. You just be good at your networking game. Try to connect to more people. Try to connect to recruiters, and try to just push in the actual information. Don't fake it out. अपना बायो अच्छे से लिखो. In your bio, tell your work role, tell your role of responsibilities, tell your everything, so that whenever a recruiter comes and see your profile, he gets to know that yeah, this person is doing this and he's good at this. And for marking for making it good, additionally what you guys can do is LinkedIn पे ना कुछ क्या कहते हैं, बैजेस होते हैं. यू कैन फाइट फॉर बैजेस. यू कैन गिव सम प्रोफिशिएंसी टेस्ट. जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू थिंक यू आर गुड एट सी प्लस प्लस एंड यू वांट देम टू सी योर स्किल्स, तो क्या कर सकते हो तुम सी प्लस प्लस के बैजेस के लिए फाइट कर सकते हो. यू गाइस कैन गिव दोस फ्यू क्विजेस एंड कॉन्टेस्ट. उसके थ्रू यू कैन मार्क, यू कैन टेक अप अ बैच सो दैट जो रिक्रूटर्स होता है लिंक्डइन पे उनको पता चले that yes, you're good at this particular skill. For example, you're good at SQL, you're good at Java, you're good at C++. तो ये सब चीजें कर सकते हो. Through it you get badges on LinkedIn, which makes your profile more concrete. ठीक है. तो LinkedIn हमारी सबसे अच्छी होगी. उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप आता है, that comes on to resume. अब resume में मैं तुम लोगों को थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा.
एंड मीन वाइल या, और मैं थोड़ी थोड़ी देर में तुम लोगों के क्वेश्चन देखता रहूंगा. सो मेक श्योर दैट यू राइट ऑल योर क्वेरीज, and absolutely I answer every single one, every single query every time, so don't hesitate to ask me anything. So along with that, I'll tell you some of the myths regarding FAANG. काफी लोग पूछते हैं the only top quality institutions students get into FAANG or MAANG. So this is absolutely not correct. When you'll see this company, when you'll go in these company, you'll see more employees. They are not from, they're not Harvard grads or they are not IIT grads. तुम लोग को ज्यादा लोग वो नहीं मिलेंगे, but you're going to see more hardworking people. So this is just a myth that can you go into FAANG or can you go into MAANG? Even you're going to see some professionals who are from humanities and as well, ऑल अराउंड द वर्ल्ड. सो ये मिथ हमेशा अपने दिमाग में मत रखना कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस के बच्चे ही जाते हैं या अच्छे कॉलेजेस के बच्चे ही फैंग मैंग में जाते हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं है. इफ यू आर गुड इनफ देन यू आर able to go, so don't worry about it. Okay, coming on to the next thing, uh, कि is computer science the only requirement? Absolutely not. I'm an electronics graduate and even I'm in Microsoft, and there are a lot of people जो electronics में, people who are in metallurgy, they're getting placed in very good companies. So ये सब चीजों के बारे में नहीं सोचना है. Just focus about your skill set. Alright. सो आ जाते हैं रेज्यूमे बिल्डिंग पे. रेज्यूमे बिल्डिंग के लिए मैं हमेशा कुछ कुछ शॉर्ट टिप्स तुम लोगों को बताता हूँ. दिस होल सेशन इज गोइंग टू हेल्प यू इन व्हाट ऑल टिप्स, व्हाट ऑल थिंग्स यू शुड फोकस ऑन फॉर गेटिंग इनटू मैथ. तो पहली चीज आती है रेज्यूमे बिल्डिंग. तो जब भी हम रेज्यूमे बिल्डिंग की बात करते हैं, जब भी वी टॉक अबाउट रेज्यूमे बिल्डिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट यू ऑलवेज मेक अ वन पेज रेज्यूमे. इफ यू हैव एक्सपीरियंस लेस देन 10 years, ठीक है ना, if you have experience less than 10 years, it's highly advisable that you should have a one page resume. If you have more experience or more number of projects, you can just exceed it to 1.5 or 2 pages at max. Top समय 2 पेज रखना है. If you are working professional and if you have experience more than 10 years, then it is fine to keep a 2 page resume, or you're applying for a bigger role, then it's fine. But people who just have experience less than 10 years, or those who are wanting to apply for internships and all stuff, you should keep it one page resume, because I'll tell you, at max a interviewer just see a resume for like at most 10 seconds. So 10 seconds mein you guys should pitch in the most impressive terms in your resume, rather than making it more bulky, rather than making it more lengthy and telling them what all you have done. It's not at all advisable. Keep it a bit short and keep it a very crisp. Your resume should be very crisp. So one lengthened resume for all working professionals is more than enough. Second thing, include metrics. Why metrics? Because it shows you number and it shows about your passion, that what all you have achieved. राइट. तो हमें सबसे पहले ये चीजें करनी है. इसके अलावा और भी कुछ टिप्स है. फॉर एग्जाम्पल, यू शुड नॉट मेंशन ऑल योर वर्क. आपको सारा वर्क मेंशन नहीं करना है. ओनली वर्क दैट इज रेलेवेंट टू यू. ठीक है. जो भी चीजें रेलेवेंट है उसके थ्रू तुम लोगों को काम करना है. जो भी चीजें रेलेवेंट है फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, उसके बेसिस पे काम करना है. दिस इज हाउ यू कैन थिंक अबाउट इट. तो रेज्यूमे में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है. तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है. क्या क्या चीजें तुम लोग बता रहे हो, क्या क्या चीजें एक्चुअल में होनी चाहिए. नंबर्स highly advisable. It should have all the numbers, और ये सारी चीजों के ऊपर हमें हमेशा ध्यान रखना है. एंड ऑल्सो मतलब जितना छोटा रेज्यूमे होगा उतना इंप्रेसिव होता है, बिकॉज उनको थोड़ा कम टाइम लगता है पढ़ने में. दिस इज मोर एडवाइजेबल. ऑल राइट. ठीक है. तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है. इट शुड बी वेरी प्लीजेंट. तो ये था हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है, हाउ टू गेट इनटू मैंग. रेज्यूमे हमारा जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए. तो हम लोगों ने रेज्यूमे कर लिया. रेज्यूमे हमें समझ आ गया कि हम लोगों ने रेज्यूमे कैसे बनाना है. शॉर्ट बनाना है. इन्फॉर्मेशन शुड बी रेलेवेंट. ऑलवेज शो योर प्रोजेक्ट्स जो तुम ने लाइव किए, या फिर है ना कोई रिक्रूटर आता है और वो खोल के देख सके यस ही हैज डन दिस प्रोजेक्ट. देखो, सिर्फ गिटहब पे अपलोड करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट. तुमने कोई प्रोजेक्ट बनाया, उसको तुमने गिटहब पे अपलोड कर दिया, दैट इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट. उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि क्या तुमने उस प्रोजेक्ट के थ्रू हैव यू एवर सॉल्व्ड अ प्रॉब्लम. फॉर एग्जांपल, तुमने सोसाइटी को कोई हेल्प किया है, और is it currently running or not, is it running in the background, क्या अभी वो काम कर रही है. ये सारी चीजें होती है, ये
ये जो चीज़ होती है, ये जो क्वेश्चन होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हमें हमेशा ज़्यादा ध्यान देना है। Apart. So when it comes to preparation, the most important thing is DSA. So not only for people who are just a beginner who are just in their colleges, not just them, but also who want to apply for senior levels. For example, if there's someone who wants to apply for senior managers or principal managers, so there are particular structure of these companies. Every particular company has their own structure. For example, Microsoft has SDs, then senior softwares, then managers, then principal managers, then vice principal managers, and so on and so forth. So for all particular levels, at least one should know uh, how to code. At least for प्रिंसिपल मैनेजर भी होता है, उनको भी थोड़ा कोडिंग आना चाहिए, बट विद एक्सपीरियंस तुम्हारा कोडिंग पार्ट थोड़ा लेस हो जाता है, बट अगेन दिस इज नेसेसरी फॉर एवरीवन. सो whether you want to shift to a company, whether you want to apply for a new company, it is highly advisable that you should practice data structures and algorithms. Even people who जो अभी working professional है, they also at least they do data structures and algorithms. तो उसकी preparation हम लोगों ने करनी है. So there are two ways to prepare, right? दो ways होता है prepare करने के. Either you can स्क्रॉल अप यूट्यूब, तुम यूट्यूब पे जाके चेकआउट कर सकते हो एंड सी द प्लेलिस्ट की क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, एंड देन उसके अंदर तुम्हारा जो एक्चुअल है, यू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन गेटिंग टू नो लाइक व्हाट ऑल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, कि एडवांस डेटा स्ट्रक्चर कितना करना है, नॉर्मल नेसेसरी डेटा स्ट्रक्चर्स कितने करने हैं, या इज एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट और नॉट. इन सब चीजों पे हमारा जो होता है पर्टिकुलर टाइम वेस्ट होता है. सो आई जनरली टेल पीपल टू टेक अप कोर्स बिकॉज इट इज ऑल स्ट्रक्चर्ड. So if you're going to ask me, I'll always say कि यार take our course because it is going to help you a lot. है ना, काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है, और इट इज, एंड इसके अलावा ये तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प करेगा बिकॉज स्ट्रक्चर होता है, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होता, यू डोंट हैव टू हॉप टू वन प्लेस एंड अनदर. ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. तो इन सब चीजों के ऊपर हमेशा ध्यान देना है. टेक अप अ कोर्स एंड डू डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स. नाउ अगर मैं कुछ कंपनीज की बात करूं, फॉर एग्जांपल फेसबुक, Amazon या नेटफ्लिक्स, गूगल, इनकी बात करूं, दे आर a lot algorithmically aligned. अब algorithmically aligned का मतलब क्या है, कि they are going to grill you on questions. They want to see how much you're good at problem solving, तुम्हारी problem solving skills कितनी अच्छी है. So the more number of questions that you do, the more better you are, the more chances that you have. ठीक है, इंटरव्यू राउंड्स पे आएंगे कि क्या क्या इंटरव्यू राउंड से पूछ जाता है. इन मीन वाइल, if I stop my cam, just I want you to know like I am suffering from back pain a lot from like past week. So that's why I'm having a bit problem. So uh, sorry for pauses in between. All right. So ऑलराइट, कमिंग ऑन टू प्रेपरेशन. ठीक है, तो प्रेपरेशन में हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स करना है. अब उसकी मल्टीपल रिसोर्सेज है जो तुम सीधे चेकआउट कर सकते हो. मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिंक अटैच करी है इन द लाइव चैट इटसेल्फ. यू गाइस कैन ओपन अप द लिंक. उसके अंदर मैंने बता रखा है हाउ डिड आई प्रिपेयर एंड क्रैक माइक्रोसॉफ्ट. और एंड टेलिंग यू गाइस, आई एम नेवर एवर फोकस्ड ऑन सिंगल कंपनी. जब भी हम लोग कंपनी में अप्लाई करने जाते हैं ना, तो कभी हम सिंगल कंपनी का नहीं सोच के जाते. वी ऑलवेज अप्लाई फॉर
ऑल द कंपनीज है ना। ऐसा नहीं होता कि मेरे को माइक्रोसॉफ्ट ही जाना तो मैं सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के टेस्ट दे रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं होता है। आई हैव अप्लाइड फॉर गोल्डमैन सैक्स, डी शॉ, आरसीजियम, हर कंपनी के टेस्ट दिए, देन आई गॉट शॉर्टलिस्टेड। तो the overall preparation plan is not unique for just Microsoft, it is going to be valid for FAANG, MAANG and all. तो इन सब चीज़ों का हमेशा ध्यान देना। तो you guys can check out my preparation plan on that particular doc। मैं तुम लोगों को वो एक सेकंड दिखा भी देता हूँ, let me just share it। दिस इज द डॉक लिंक, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि हाउ डिड आई स्टार्ट विद इट, मैंने कैसे प्रिपेयर किया, फिर सेकंड फेज में कैसे घुसा घुसा हाउ हाउ डिड आई गो अबाउट माय सेकंड फेज, देन व्हाई डिड आई चूज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बाद व्हाट ऑल कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स आर नेसेसरी टू गो अबाउट इट, ठीक है। फिर मेरे प्रोजेक्ट्स एंड रेफरेंसेस, दिस देखो पूरे डॉक में अगर तुम कुछ पढ़ो ना पढ़ो, प्लीज चेक आउट एटलीस्ट दिस ये जो चीजें है ना रेफरेंसेस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें कहीं पे भी मिलेगी ना वो रेफरेंसेस होती है, बिकॉज रेफरेंसेस इज गोइंग टू हेल्प यू। देखो हम लोगों ने कहीं ना कहीं से प्रैक्टिस किया है, तो हम लोग तुम्हें रेफरेंसेस बताते हैं कि जिससे तुम लोग भी उन्हीं सेम जगह से प्रैक्टिस कर पाओ। तो तुम रेफरेंसेस में जाके चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे ये कुछ कुछ लिंक्स है जहाँ पे तुम लोग कोड स्निपेट्स देख सकते हो, एंड दीज आर द बुक्स दैट आर रेफर्ड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो हर किसी को करनी चाहिए, दैट इज सीटीसीआई क्रैकिंग द कोड इंटरव्यू बाय गेल लैकमैन, एंड सबकी लिंक्स मैंने अटैच कर दिया, तुम लोग सीधे यू गाइस कैन चेक इट आउट फ्रॉम द लिंक इटसेल्फ, ठीक है। और नीचे नीचे मेरी एसडी शीट भी है, तो एसडी शीट जो है उसके अंदर मैंने इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चन डाल रखे हैं, दे आर नॉट इजी क्वेश्चन। सो व्हेनेवर यू डू लीड कोड या फिर कोड स्टूडियो पे तुम जाके प्रैक्टिस करते हो, एंड व्हेनेवर यू थिंक दैट यू आर अलॉट प्रिपेयर्ड, तो तुम जाके ये मेरी एसडी शीट जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। इट हैज लिंक्स टू ऑल द क्वेश्चन, तुम लोग सीधे वहां पे लिंक पे डायरेक्ट हो गए एंड you can do it. Okay, so coming back on the actual document that you wanted to discuss on, let me come back to it. या सो रेज्यूमे बिल्ड कर ली और प्रेपरेशन कर लिया। अब प्रेपरेशन करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ साथ मैं हमेशा competitive programming, I tell everyone to do it. Why? The reason that I chose competitive programming is because competitive programming is going to help you a lot in seeing unseen question. तो जब भी तुम लोग जाओगे गूगल का इंटरव्यू दोगे या माइक्रोसॉफ्ट का अमेजन का इंटरव्यू दोगे या फेसबुक का इंटरव्यू दोगे, यू आर नेवर गोइंग टू सी रिपीटेड क्वेश्चंस, you're never ever going to see repeated questions, and because we don't see much of repeated questions, तो हम लोग को क्या होता है काफी ज्यादा दिक्कत होता है इन अटेम्प्टिंग दोज क्वेश्चन जो हमारे लिए नए हैं या बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट के हैं, तो हम लोग वो नहीं करते, ठीक है। तो उस केस में कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हमारे को काफी ज्यादा हेल्प करती है। कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हमारे को काफी ज्यादा हेल्प करेगी बिकॉज इट हेल्प्स अस टू गेन कॉन्फिडेंस, हमारे को कॉन्फिडेंस गेन करने में काफी ज्यादा हेल्प करती है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये फैंग, मैंग, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, ये इतनी बड़ी चीज नहीं है इफ यू आर फुल्ली कॉन्फिडेंट। अगर तुम फुल्ली कॉन्फिडेंट हो और तुम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, देन आई डोंट थिंक दिस इज अ ब्लॉकर। ब्लॉकर जो है वो हम खुद है, बिकॉज वी डोंट प्रैक्टिस इनफ। हम लोग ये सोचते हैं, देखो अभी भी आई सॉ समवन आस्किंग कि कितना टाइम देना चाहिए, जबकि द क्वेश्चन शुड बी कि यार बचना ही नहीं चाहिए टाइम, ठीक है, बचना ही नहीं चाहिए। कम से कम तुम लोग नेक्स्ट टाइम मैंने भी कम लाइव तुम लोग को ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए कि सर कितना टाइम दे, कितने टाइम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए, कितने टाइम में विल बी प्रोफिशिएंट इनफ। तो कभी ये सारी चीजों के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। जो चीजों के बारे में सोचना है वो ये है कि हम लोग प्रिपेयर क्या करें, क्या चीजें मिसिंग है, क्या क्या चीजों से हम लोग क्या क्या चीजों से हम लोग बहुत क्रिस्प बना सकते हैं हम खुद को। तो हम लोग को इन सब चीजों के बारे में सोचना है। तो प्रिपरेशन में सीपी इज प्लेइंग अ मेजर रोल बिकॉज इट हेल्प्स यू टू डू अननोन क्वेश्चंस, अनसीन क्वेश्चंस इन अ टाइम बैरियर। तुम लोग कॉन्टेस्ट जैसे दोगे, कॉन्टेस्ट के थ्रू यू आर गोइंग टू डू 4 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन इन 1.5 hour, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन अपस्किलिंग योरसेल्फ। तो ये था जो था हमारा प्रिपरेशन का पार्ट, कि ये प्रिपरेशन हम लोग इन कैसे करनी है। सो कमिंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पर्सनल प्रोजेक्ट्स और प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स। तो इसकी ना खासियत है, व्हाई? बिकॉज अगर तुम लोग इंटर्न्स हो तो तुम्हारे कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स होंगे रिलेटेड टू योर वेब डेवलपमेंट या फिर मशीन लर्निंग या फिर व्हाटएवर काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट यू आर डूइंग। आजकल तो ब्लॉकचेन भी काफी ज्यादा चल रहा है, तो तुम लोग ब्लॉकचेन भी कर सकते हो। बट अगेन
आई हाईली एडवाइज पीपल टू डू वेब डेवलपमेंट एंड ऐप डेवलपमेंट. बाय? बिकॉज तुम लोग को इसके रिसोर्सेज भी काफी ज्यादा मिल जाएंगे. एंड रिसोर्सेज के थ्रू तुम लोग को क्या मिलेगा? you're going to have a lot of peers connecting around you जो तुम लोग को help कर सकते हैं, which is a very important thing when it comes to programming. क्योंकि developing और programming ये जो होते हैं ना projects, ये कभी single handedly नहीं होते. You have a team and you work on collaboratively. तुम collab करते हो चीजें सीखने के लिए. तो make sure that you make your personal projects and make it live. For example, either you buy a domain या फिर तुम कुछ ऐसा real time project बनाओ जो तुम लोग showcase कर सको that yes you have worked on it. इधर या फिर अगर तुम्हारे कोई प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स है तो तुम लोग वो भी कर सकते हो. प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इट शोज यू. अगर तुम्हारे पास कोई अच्छी कंपनी होती है, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ गुड इंटर्न, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास कोई भी ठीक ठाक से इंटर्न है, तो इट टेल्स यू दैट अगर दैट तुम्हारे पास इतनी अच्छी कंपनी है तो तुम पे टाइम कम लगेगा. सो इट ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस योर चांस इनटू टू गेट इनटू फैंग एंड मैंग. तो हमेशा हमारे जो पर्सनल प्रोजेक्ट्स होते हैं या फिर प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं, ट्राई टू मेंशन देम इन योर रेज्यूमे इंपॉर्टेंस के साथ. जो ज्यादा इंपॉर्टेंस है, द थिंग दैट यू थिंक इज मोर इंपॉर्टेंट शुड बी ऑन द टॉप. और फिर नीचे नीचे थोड़े जो लीस्ट इंपॉर्टेंट. आई थिंक टू गुड प्रोजेक्ट्स ऑन योर रेज्यूमे प्लेज वेल. इससे ज्यादा नहीं लिखना है. जस्ट राइट टू important projects that you've worked on, two important internships or work experience that you've worked on. And even for resume, I'll tell you, अगर तुम working professional हो and you've been in the industry for more than 10 years, I don't think degree plays a big role, because degree 10 साल बाद इतना matter नहीं करती. 10 साल बाद जो चीज matter करती है, that is your experience. So again, that's why I tell you guys, try to mention those things which are important, which are a lot important. तो वो सब चीजें. So this was the third point. अपने projects जो करने हैं वो बहुत अच्छे करने हैं. ठीक है, प्रोजेक्ट जो होते हैं उसके अंदर सब कुछ होना चाहिए. इफ यू टॉक अबाउट गूगल, फेसबुक, दे ट्राई टू ब्रश अप पीपल ऑन स्केलेबिलिटी. ठीक है, अभी मैं धीरे धीरे जब हम इंटरव्यूज पे आएंगे, राउंड्स पे आएंगे, तब मैं तुम लोगों को काफी सारी चीजें बताने वाला हूँ. एंड दिस लाइव इज गोइंग टू बी अ लॉट न्यू इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट. ठीक है, तो प्लीज स्टिक टू द एंड ऑफ द वीडियो, बिकॉज ये जो था अभी तक का था, दैट वाज टोटल कॉमन कंटेंट फॉर नाउ. बट इसके बाद आई एम गोइंग टू टेल यू क्वेश्चंस, हाउ टू आंसर देम, बिहेवियरल क्वेश्चंस जो होते हैं वो कैसे आंसर करने हैं. ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में आराम से देखना. हाउ वाज आई एबल टू क्रैक इंटरव्यूज, हाउ डू आई गो अबाउट इंटरव्यूज, तो ये सब चीजें देखना है. दैट्स आई एम मेकिंग एडिशनल नोट्स इन डाउन साइड. तो जल्दी से हमारा ये सब चीजें खत्म कर लेते हैं. सो वी हैव डन प्रोफेशनल एंड पर्सनल प्रोजेक्ट्स. थर्ड स्टेप हमारा हो गया. फोर्थ स्टेप जो हमें करना है, वी शुड हैव अ नॉलेज अबाउट कोर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स दैट आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड सिस्टम डिजाइंस. अब स्टार मार्क कर रहा हूं मैं सिस्टम डिजाइंस पे, बिकॉज फॉर बिगिनर्स इतना सिस्टम डिजाइंस नहीं पूछा जाता, बहुत बेसिक लेवल की चीजें पूछी जाती है. बट एज सुन एज अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है, दैट मींस इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, देन सिस्टम डिजाइंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू राउंड्स जो तुम लोगों से पूछा जाएगा. तो कभी सिस्टम डिजाइंस को इग्नोर नहीं करना है. मैं सिस्टम डिजाइंस की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स तुम लोगों को बता दूंगा जो तुम लोग पढ़ सकते हो. तो कंप्यूटर साइंस के कोर सब्जेक्ट्स हम लोग नहीं बोलेंगे. अब कोर सब्जेक्ट्स करने के काफी ज्यादा तरीके हैं. यूट्यूब पे यू गेट अ लॉट ऑफ प्लेलिस्ट, यू हैव गेट स्मैशर्स, यू हैव a lot of people on computer core science subjects जो पढ़ाते हैं. You guys can just check out the links. और the thing that I did was, मैंने क्या किया था, मैंने सबके top 50 इंटरव्यू क्वेश्चंस कर लिए थे. top 50 इंटरव्यू क्वेश्चंस of OOPS, of OS, of DBMS, of CN और सिस्टम डिजाइन. अब सिस्टम डिजाइन का मेरे पास एक बहुत अच्छा कोर्स है जो मैं तुम लोग को हाईली एडवाइस करता हूँ. ठीक है, इफ यू वांट टू लर्न सिस्टम डिजाइंस, देयर इज अ कोर्स नेम सिस्टम डिजाइंस प्राइमर बाय educative.io. तो educative.io का तुम लोग सिस्टम डिजाइंस प्राइमर कोर्स कर सकते हो, which is the best course that you're going to see on the internet for system design. So तुम लोग वो चेकआउट करके सिस्टम डिजाइन कर सकते हो, एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू डू. ठीक है, तो हम लोगों ने कोर सीएस सब्जेक्ट्स ही पढ़ लिए. नाउ कमिंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द मोस्ट अवेटेड वन, कि इंटरव्यू राउंड्स कैसे कैसे होते हैं. तो इंटरव्यू राउंड्स है यहाँ पे लेवल वाइज बता रहे हैं. फर्स्ट इज योर टेलीफोनिक राउंड, सेकंड इज योर फेस टू फेस राउंड, थर्ड इज योर ऑन साइट राउंड. डिपेंड्स, अभी कोविड चल रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो ऑन साइट हो या नहीं. ठीक है, कोविड के बाद ऑन साइट इंटरव्यूज थोड़े कम होने लग गए हैं. फोर्थ इज, इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, सिस्टम डिजाइन राउंड is of the most important.
तो ये 4 इंटरव्यू राउंड्स हो गए। इससे पहले हमारा होगा इंटरव्यू का ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट। अगर तुम फ्रेशर हो, तुम्हारे कॉलेज में कंपनीज आती होगी, तो वो तुम्हें क्या प्रोवाइड करती है? दे प्रोवाइड यू टेस्ट लिंक। अब टेस्ट लिंक को क्लियर करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है? तुम्हारा डीएसए, 3 क्वेश्चन तुम लोगों से पूछे जाएंगे। यू विल बी आस्क्ड 3 क्वेश्चंस ऑफ मीडियोकर लेवल। मीडियोकर लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर तुम वो क्रैक कर लेते हो, तब तुम्हारे एचआर राउंड आएंगे। एंड दीज 4 राउंड्स आर वेरी वेरी इजी। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो प्लीज डू नॉट फेक इन एन इंटरव्यू। आजकल काफी ज्यादा नए नए तरीके आ गए हैं, प्लीज डू नॉट डू इट, बिकॉज these people who are hiring people from a long time, ये they are very good at getting out, they are very good at cracking whether you are good at coding or not. तो उन सबको पता चल जाता है, तो प्लीज डू नॉट फेक इट। तो टेलीफोनिक राउंड में ही जनरली टॉक अबाउट, ही जनरली आस्क अबाउट योर एक्सपीरियंसेस, या फिर कोई तुम्हें छोटा सा एल्गोरिथमिक क्वेश्चन दे देंगे, एंड इफ यू पास इट देन यू आर गोइंग टू गेट अ F2F। F2F इज फेस टू फेस, ठीक है, फेस टू फेस इंटरव्यू होगा तुम्हारा, जिसके अंदर यू आर गोइंग टू गेट अ 1 hour सेशन। अब 1 hour सेशन के अंदर व्हेनेवर यू गेट अ डीएसए क्वेश्चन, आई वांट टू शेयर दिस थिंग जो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती है। फॉर एग्जांपल, यू गेट अ क्वेश्चन, ठीक है, तुम्हें क्वेश्चन दिया है, ठीक है, पैलिंड्रोम इज द लिंक लिस्ट, is a linked list palindrome or not? For example, this is a question, ठीक है, ये तुम लोग को एक क्वेश्चन दिया इन अ इंटरव्यू। अब हाउ डू यू वांट टू अटेम्प्ट इट? फर्स्टली सुन लो मेरी बात, यू डोंट गेट अ कोड एडिटर टू डू इट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एवरीवन शुड डू पेन पेपर टेस्टिंग। पेन पेपर पे तुम लोग को लिखना आना चाहिए, जो मैं यहाँ पे टाइप करके लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। यू कैन बी आस्क्ड टू राइट योर कोड ऑन पेपर, और पेन और पेपर के थ्रू अगर कोई सिंटैक्स एरर आ गया, दैट मींस यू आर गोइंग टू राइट दैट सिंटैक्स एरर इन अ कोड एडिटर एज वेल। तो यू आर गोइंग टू गेट, आई मीन जो तुम्हारा इंटरव्यू पेपर होगा, जो तुम्हारा कोड होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। सो मेक श्योर दैट यू हैव गुड प्रैक्टिस, you do good practice, good pen and paper practice to pass it। अब जैसे क्वेश्चन आया ना, इज अ लिंक लिस्ट पैलिंड्रोम और नॉट, तो हाउ आई डू क्वेश्चन इज, मैं इंटरव्यू में कैसे करता हूँ? सबसे पहले आई राइट रोल आउट प्लान। मैं हमेशा यहाँ पे रोल आउट प्लान लिख लेता हूँ कि फर्स्ट स्टेप दैट आई डू इज आई फाइंड द मिड पॉइंट यूजिंग स्लो एंड फास्ट पॉइंटर, ठीक है, मैं पहले मिड पॉइंट फाइंड करूंगा, ठीक है, देन आई एम गोइंग टू स्प्लिट माय लिंक लिस्ट, आई स्प्लिट माय लिंक लिस्ट, ठीक है। जैसे ही मैंने स्प्लिट कर दी लिंक लिस्ट, ठीक है, आई reverse the second part, it can be iteratively or recursively, ठीक है, and then I'm going to check and validate, ठीक है। मैं हमेशा जब भी when I go in an interview, whatever question has been given to me, सबसे पहले the first thing that I do is I write the rollout plan the way I have to do the question। सबसे पहले तुम जो चीज करनी चाहिए, तुम लोगों को ये लिख देना चाहिए कि तुम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो जैसे तुम लोगों ने क्वेश्चन लिख दिया कि अब ये मेरा तरीका होगा, नाउ यू कैन आस्क योर इंटरव्यूज डिपेंडिंग अपॉन कंस्ट्रेंट्स, की कंस्ट्रेंट्स मुझे बता दो, या इज देयर एनी काइंड ऑफ एज केस दैट आई नीड टू कंसीडर, एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ कंसिडरेशन, आई जस्ट आस्क देम and try to tell them about your rollout plan कि this is the way that you're going to roll out your solution। जैसे ही तुम्हारा solution हो जाएगा, as soon as he gets to know that your way of thinking, your thought process is correct and you're able to communicate। देखो हमेशा इंटरव्यू के अंदर there is one more important thing that तुम्हारा जो communication होना चाहिए ना, communication should be good। and this thing, ये जो मैंने नीचे चीज लिखी है, ये वाला चीज, ये रोल आउट प्लान, इट इज एक्चुअली मेकिंग योर कम्युनिकेशन बेटर, बिकॉज अब सिर्फ वहां पे तुम्हारे लिए प्लान नहीं लिखा है। कभी मान लो इफ वाइल कोडिंग यू मिस आउट सम पार्ट, अगर तुम कोई पार्ट भूल गए, तो तुम सीधे जाके रोल आउट प्लान में चेकआउट कर सकते हो, यार मेरे को ये क्वेश्चन ऐसे करना था, these were the steps, I'm missing this out and this is going to help me। and it will also help you to keep your interviewer involved, and ये देख के उसको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि क्या करना चाहिए। नाउ आफ्टर दैट, जब समझ आ गया कि क्या करना है, नाउ यू कैन स्टार्ट योर कोडिंग। अब तुम अपना कोडिंग स्टार्ट कर सकते हो। रोल आउट प्लान लिख लिया तुमने, उसको समझा दिया कि व्हाट
process you are going to follow, how will you do it, test case उसको समझा दिया, and this is how you can do it. Always make sure कभी भी तुम इंटरव्यू के अंदर जाते हो and whenever you have been given uh, a question, तो make sure that you follow these steps. सबसे पहले रोल आउट प्लान लिख लो जिससे तुम्हारा ओवरऑल आइडिया जो है वो क्लियर रहे कि कैसे प्रैक्टिस करनी है. इसके बिना यू नॉट यू वोंट, मतलब अब तुम लोग क्या होगे, तुम लोग कंफ्यूज नहीं होगे. ठीक है, दिस इज व्हाट आई डू. आई एम स्टॉपिंग माय कैम फॉर सम टाइम बिकॉज आई एम हैविंग कंसिस्टेंट पेन इन माय बैक. Super sorry guys. All right, so ओके. ठीक है, तो हमेशा ऐसे करना है हमने. ठीक है, तो इंटरव्यू राउंड्स हो जाएंगे, फेस टू फेस हो जाएगा. अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन यू टॉक अबाउट पैलेंटियर या फिर फेसबुक की हम लोग बात करते हैं ना, देयर आर अ लॉट ऑफ टाइम्स सिर्फ 2 to 1 राउंड होते हैं. ठीक है, दैट मींस देयर आर 2 इंटरव्यूअर्स. तो कभी उन सब चीजों से घबराना नहीं है. अगर तुम लोगों ने प्रैक्टिस करी है तो तुम्हारा काम हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट. फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई एम मार्किंग दैट स्टार. ये सबसे ज्यादा अच्छा राउंड लगता है मुझे बिकॉज इट टेल्स अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स कि हाउ मच यू नो अबाउट द सिस्टम्स. बिकॉज आजकल जो चीजें हो रही हैं, हम लोगों से यही पूछे जा रही हैं, सिस्टम डिजाइन राउंड पूछे जा रहे हैं. इवन फॉर फ्रेशर्स सम कंपनी आस्क सिस्टम डिजाइन राउंड. सो व्हेनेवर यू आर गिवन अ सिस्टम डिजाइन राउंड, ठीक है, ऑलवेज ट्राई टू डू. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आई टेल यू हाउ टू सॉल्व इट. ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे कि हमें क्या करना है. फॉर एग्जाम्पल यू हैव बीन गिवन अ प्रॉब्लम. ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज है. फॉर एग्जाम्पल यू हैव बीन गिवन अ क्वेश्चन टू क्रिएट अ टाइनी यूआरएल. ठीक है, कि हमें टाइनी यूआरएल बनानी है. टाइनी यूआरएल आई एम श्योर सबको पता होगी. जैसे बिटली है, वो क्या करता है, बड़ी सी यूआरएल को इट शॉर्टन्स, राइट, और वही शॉर्ट लिंक के थ्रू हम लोग उसको डीकंप्रेस करके वापस से एक्चुअल लिंक पे चल जाते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल ऐसी छोटी सी लिंक होती है, इफ यू रिमेंबर bit.ly, और यहाँ पे बस ऐसे कुछ छोटा सा कोड होता है एंड इट रीडायरेक्ट्स यू टू अ वेरी बिग वेबसाइट. फॉर एग्जाम्पल facebook.com/ so on and so forth, ऐसा कुछ. अब ये जो छोटा सा यूआरएल है, ये एक बड़े से यूआरएल पे शिफ्ट कर देता है. दिस इज, ये हमें सबसे पहले जानना है. ठीक है, वील स्कोप आ प्रॉब्लम कि हमारा प्रॉब्लम क्या कह रहा है. आफ्टर having the list, after you know what all things you have to do, make reasonable assumption. Make reasonable assumption. For example, तुम लोगों को एक सिस्टम बनाने को दिया, यू हैव बीन गिवन नेटफ्लिक्स, जस्ट क्लोन नेटफ्लिक्स, या फिर यू तुम लोगों को उबर या जोमेटो डिजाइन करना है, व्हाट ऑल थिंग्स यू विल रिक्वायर. ठीक है, या फिर टाइनी यूआरएल ही बनाना है फॉर एग्जांपल. तो यू कैन मेक रीजनेबल assumption और उसके लिए तुम्हें कोई मना नहीं करेगा. फॉर एग्जांपल यू कैन टेक इनफाइनाइट स्टोरेज. यू कैन आस्क योर इंटरव्यूअर कि मैं इनफाइनाइट स्टोरेज ले लूं, और you can just give them a bottleneck कि I can just have 100 users per day. ठीक है, this kind of assumption you can take. ठीक है, तो second step that you have to do in any kind of design process, make reasonable assumption. उसके बाद draw your major components. ठीक है, हम लोग सिस्टम डिजाइन की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सिस्टम डिजाइन. तो सिस्टम डिजाइन करने के लिए तुम्हें पूरे सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए. तो सिस्टम की नॉलेज कैसे होगी, यू शुड नो फंडामेंटल नॉलेज की क्या क्या चीजें होती है एक सिस्टम में, व्हाट ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड, और ये तुम्हें एक्सपीरियंस के साथ आएगा. नाउ अब हम ये कैसे डिवाइड कर सकते हैं, हाउ कैन वी डिवाइड दीज कंपोनेंट्स. हम लोग को ये तो चीज पता है कि फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है, डेटाबेसेस होते हैं. तो इन्हीं के थ्रू यू कैन क्रिएट अ शॉर्ट एक मेजर कंपोनेंट बना सकते हो कि यार लोड बैलेंसर यूज करना पड़ेगा, या फिर फ्रंट एंड में ये होना चाहिए, यहाँ पे सिस्टम, यहाँ पे डेटा पार्स होना चाहिए. सो यू कैन मेक योर ओन मेजर कंपोनेंट्स. अब जब तुम्हारा बन गया, आफ्टर दिस पॉइंट ये थर्ड पॉइंट के बाद नाउ यू हैव अ रीजनेबल वर्किंग सिस्टम. अब वर्किंग सिस्टम तुम्हारे पास है कि तुम्हें प्रॉब्लम भी बताए, तुम लोगों ने अजम्पशन भी ले लिए. आफ्टर अजम्पशन नाउ यू हैव योर मेजर कंपोनेंट्स कि ये कंपोनेंट होने चाहिए, ये चीजें हेल्प करेंगी. दीज आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इन एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ये मैं तुम्हें सिस्टम डिजाइन राउंड के लिए स्पेसिफिक बता रहा हूँ बिकॉज जो कोई नहीं बताता, सिस्टम डिजाइन राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट राउंड, नॉट जस्ट फॉर फ्रेशर्स बट ऑल्सो फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स. ये सारी चीजों के बारे में हर कोई बता देगा कि प्रिपेयर कहाँ से करना है, मैं भी बता देता हूँ, प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स कहाँ से करना है, कोर्स कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स कहाँ से करना है. बट दिस राउंड, this is one of the most crucial
one of the most hardest rounds in your interview. तो इसके बाद now you'll identify your key issues. Identify your key issues. कि तुम्हारे जो तुम्हारा जो तुमने एप्लीकेशन बनाई उसके बॉटलनेक्स क्या है? व्हाट आर दी बॉटलनेक्स? ठीक है, तुम्हारी जो थ्रूपुट लिमिट है या फिर बैंडविड्थ लिमिट है वो कितनी है, क्या क्या चीजें तुम देख पा रहे हो, व्हाट आर द की इश्यूज उनको, जैसे ट्रैफिक से रिलेटेड इश्यूज हो गए फॉर एग्जांपल, you scaled up your uh, you scaled up your application for 100 users, but at particular point of time 1000 users आ गए, just 1000 users, your app is going to crash. At this time what things that you'll do? तो ये की इश्यूज हमें क्या करना है, डिफाइन करना है. उसके बाद आफ्टर डिफाइनिंग द की इश्यूज हम क्या करेंगे, रीडिफाइन करेंगे हमारा स्ट्रक्चर. We'll redefine our structure. For example, because of this bottlenecks and 100,000 users, let's assume तुम्हारा डेटाबेस बहुत ज्यादा हिट हो रहा है, डेटाबेस इज गेटिंग इट. तो इसको स्ट्रक्चर, इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या यूज कर लेंगे, वी आर गोइंग टू यूज कैशेस. आई होप सबको कैशेस पता होगी. देयर इज अ लेयर बिटवीन योर मेन सिस्टम एंड डेटाबेस, उसके बीच में होती है एक लेयर कैश, which makes your system, which makes your calls, which makes your writes and reads very fast. That is called cache. तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है that makes your query fast. ये हमारी query fast करता है. तो this is how you solve a problem. किसी भी सिस्टम डिजाइन राउंड में these are the 5 steps that you have to take. ऐसे ऐसे करो और ये करना है हमने. एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम ये सारी चीजें कर पाए तो तुम लोग एक्चुअल में सिस्टम डिजाइन राउंड पार कर पाओगे. एंड सिस्टम डिजाइन राउंड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर फेसबुक, फॉर गूगल, फॉर नेटफ्लिक्स, फॉर अमेजन, फॉर एप्पल. तो प्लीज मेक श्योर दैट यू डू. तो ये हमारे हो गए 4 इंटरव्यू राउंड्स. कमिंग ऑन टू द लास्ट थिंग जो हमसे पूछी जाती है, बिहेवियरल राउंड्स, जिसपे हम लोगों में से काफी ज्यादा लोग फोकस नहीं करते हैं. बट आई टेल यू, यही तुम्हारे रिजेक्शन का काम होता है. अ लॉट ऑफ टाइम आई हैव सीन पीपल, आई नो माय फ्रेंड्स, जो लोग 3 से 4 बार एचआर राउंड में पहुंच चुके हैं, दे गेट किक्ड आउट बिकॉज दे डोंट आंसर इट वेल. तो बिहेवियरल क्वेश्चन जो होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. जैसे मैं तुम लोग को एक एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल, तुमसे अगर कोई पूछा जाता है व्हाट आर योर वीकनेसेस, तो एक एग्जांपल हो गया that that my biggest weakness is that I work hard. Now when I talk about this particular statement, जब मैं इस statement की बात कर रहा हूँ, it is going to tell that you are very adamant. It is going to tell that you won't ever listen to someone. Why? Because you are actually saying that your weakness is that you work hard. तो तुम पहले बता रहे हो कि हाँ मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ. तो हम लोगों को कभी ऐसे आंसर नहीं देने. इधर तुम लोग ऐसे बता सकते हो that I don't give much details to, that I don't give much attention to details, and which is why I miss out on some things and I have to restructure my answer. अब ये जो वीकनेस है, it exactly tells you the thing कि यार ये बहुत जेन्युइन सी लग रही है. बिकॉज हम लोग काफी बार genuinely a lot of times we don't focus on details, जिसकी वजह से we miss out on a lot of things. तो हमेशा हमें ऐसी चीजें बतानी है जो एक्चुअल लगे, rather than faking out कि यार मैं बहुत ज्यादा काम करता हूँ और ये मेरी वीकनेस है, रात भर जग के काम करता हूँ. तो हमें कभी ये चीजें नहीं बतानी है. It actually shows your carelessness, and it actually shows your that you're arrogant and you won't admit to your faults. तो हमें कभी ऐसी चीजें नहीं करनी है. ठीक है, तो नेवर एवर ट्राई टू बी एरोगेंट, कभी एरोगेंट नहीं रहना है. एंड ऑलवेज बी बिट जेंटल, बिकॉज ये जो इंटरव्यू होते हैं दे आर वेरी इजी टू परसुएट, बहुत ज्यादा इजी होता है. तो हमें कभी इन पे इतना ज्यादा कभी डरना मत इन सब चीजों से. बहुत ज्यादा इजी राउंड होते हैं, काफी ज्यादा चिल होते हैं. इफ यू गेट स्टक इन एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू, तुम लोग को इंटरव्यूअर्स हेल्प कर देते हैं. तो कभी इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना है. ठीक है, तो ये जो चीजें थी, इफ यू आर गोइंग टू फॉलो अप इट दिस वे, इसके अंदर एक एक चीज जो है, एवरी सिंगल स्टफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेदर इट बी योर behavioral rounds, whether it be your interview rounds, your core CS subjects, every single thing marks of equal importance, of equal weightage. अगर तुम्हारा resume अच्छा नहीं है तो तुम next step पे नहीं जाओगे. If your core science subjects are not good, then you're also not going on to the next step. तो इन सब चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है. And this is how you can get into a FAANG or a MAANG company. अगर तुम इन सारी चीजों के बारे में, resume building, preparation, your projects, your core computer science subjects, your interview rounds, or behavioral question, if you
focus on them. Trust me, you can go into FAANG, MAANG, or whatever company that you want to try for. तो ये कुछ थी important चीजें. Now let's look at some answers. कुछ कुछ questions के ऊपर ध्यान देते हैं. Let's uh, take up some questions. So, all right, a lot of spamming. Uh, Akanksha is saying just completed her second year today. Not good at coding. What roadmap should follow? What roadmap can I follow? Akanksha, see my link, which is just two comments above, uh, and I've attached. How did I prepare? What I tell you in short is try to prepare. ये जो मैंने अभी सामने जो तुम्हें how to get into FAANG Man का plan दिख रहा है ना, try to start with DSA preparation today itself, and along with that, try to include giving contest on a daily basis, because contest is going to help you a lot. It is going to upskill yourself in terms of your current level rating, your current coding level. Okay, along with that, it is going to help you get a bit confidence in seeing new questions, and trust me, it is going to help you, and it has helped me a lot. Even a junior of mine just became a five-star coder. He's in second year electronics of my college. He just became five-star coder at CodeChef, and he was just doing this thing, DSA plus CP. He was giving contests parallelly, and he was able to do it. So if he can, I think everybody can. So just don't be demotivated. Mr. Sao is asking, can a BCA student apply and crack any product? Bro, I just told you कि ह्यूमैनिटीज के भी लोग हैं जो माइक्रोसॉफ्ट गूगल के अंदर है. ठीक है, because they are showing their skills. They're telling that they are different. They're doing their stuff. So everybody can, whether it be BCA or anybody else. If you have good skills, absolutely, you're most welcome in these company. यार डिग्री तो जरूरी है. डिग्री इज इम्पोर्टेंट. या डीएसए कहाँ से करना चाहिए, बहुत चॉइसेस हैं इसलिए कंफ्यूज हूँ. जिग्नेश, सो if you, I mean, I that's your own personal choice. If you think that you want a structured content, I tell you to do a course. I personally did coding ninjas ka course, both competitive programming and foundation in DSA, and currently I'm taking a live course. So I suggest ki you guys can join the live course, because it helps you to connect with the teachers as well, and you guys can clear your doubts. I think my live students are very happy about the course because they are able to solve their problems uh, at that very moment, which was a problem when we were seeing the pre-recorded lecture. So I think you should start with a course. uh, it is going to help you with programming and other stuff as well. So yeah, that's my take on it. Flutter or Java? Shruti is asking. Flutter is for app. Yeah, you can make an app through Flutter. Flutter is a very good choice, and Java is also equally good. But I think you should go with Java. Java पहले सीख लो, then go with Flutter, because Java is a very big world. A lot of spamming. Okay. Thanks, Lone Wolf. Vijay is asking, can you share your DSA roadmap, which include all topics of DSA? Just a second. Let me show this as well. Okay, so just a second. I think, yeah. So this is the complete DSA roadmap that you can follow. ठीक है, ये सेम इस ऑर्डर के अंदर करना है. ठीक है, the same order. We are going to start with time complexity, then we are going to do maths and number theory. Maths and number theory is very important. Uske important topics I mentioned it. uh, Along with that, 1D array, then 1D array के बाद 2D array, then strings,
then string algorithms and sorting and searching, pointers, which is very important topic. Yeah, a lot of people miss out on it. A lot of people miss out on it, but ये इंटरव्यू में पूछा जाता है. अच्छा, मैं एक और चीज बता दूं. When it comes to pointers, right, when you go in Java or when you talk about Python or C, ना पाइथन ना जावा ना सी, इन तीनों के अंदर पॉइंटर्स नहीं है, बट इट इज आस्क्ड इन इंटरव्यूज. तो जस्ट थिंक अबाउट, अगर तुमसे पॉइंटर्स पूछ लिया तो तुम आंसर ही नहीं कर पाओगे अगर तुम्हें पाइथन आती है, विच मेक्स सी प्लस प्लस अ बेटर चॉइस देन अदर लैंग्वेजेस. सो यू कैन जस्ट डू दिस. फिर उसके बाद आफ्टर वी डू पॉइंटर्स, फिर रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग, ग्रीडी एल्गोरिथम, लिंक लिस्ट, टैग्स एंड क्यूज, हैश मैप, सेट, सेट बोथ ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड सेट, trees के तीनों टाइप, generic trees, binary trees and BST, then priority queues, tree, uh, graphs is more important. Graphs हमें अच्छे से करना है. Dynamic programming, today I took a class on dynamic programming as well. आज मैंने dynamic programming ही पढ़ाया. So yeah, these are important topics. Let me just share this as well. Let me just, okay. So if you want to check this out, the topics, you guys can just check. I mean, you guys can just do it as well. So let me just share it. Okay, all right. Comment section में check out कर लेना. I've shared this link as well. So this was the complete roadmap link. All right, and let me come back to that. Okay, so coming on to the next few comments. So for big companies, for like quality, quality check engineers, learning DSA is mandatory. Uh, for quality testing, I guess yes, because whenever you write a code, you're they try to see whether how much you're good at testing and how will you write unit test and all the other stuff, right? So I think yeah, DSA is mandatory for them as well, so that you acha, so that you write good unit tests. So for all those people who don't know about unit test and all stuff, for all people those who don't know about unit test and all stuff, whenever you go in a company, every algorithm or every function that you make, you try to test it out. तो उन testing के लिए what we do is uh, uh, we make testing functions जिनको हम unit test कहते हैं. तो उन unit test के थ्रू we try to validate and pass checks. हम लोग ये check करते हैं whether the result that coming out is correct or not, and this is how we try to analyze and debug things when we are in company. So for that also DSA is mandatory. uh, can you tell me how much math you did for CP? जितना मैंने इधर डॉक्यूमेंट में शेयर किया था, only that much maths is important, जिसके अंदर you do related to number theory, primality test, sieve of Eratosthenes, that means prime factorization, prime numbers का, और यूलर टोशेंट, और कुछ कुछ मेजर चीजें हैं, वो देख लेना. काफी मेन चीज है. ज्यादा नहीं किया था मैथ्स, बट अगेन मैथ्स वाज अ लॉट फन. For internship in Facebook, you'll have to contact recruiters on a personal basis. For that, make sure that you have a good LinkedIn, make sure that you have a good resume. Should be one page resume, should include metrics, should show your experience, should show your work plan, what you've done till now. And stipends are huge. Stipends are huge. I mean, I don't know the exact figures of uh, Facebook, but as far as I know, uh, for Microsoft, the intern stipend is 1,25,000, and 1.5 for D or Cesium, I guess. So it is actually huge. Mm, Huria is saying she's from Pakistan. Can I get into Microsoft India? Um, I don't know, but just check out the intakes.
रोहन यादव इज सेइंग मुझसे कुछ डीएसए क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहे हैं उनको सॉल्व कैसे करूं. लॉट ऑफ टाइम रोहन मुझसे भी नहीं होते थे. जस्ट चेक इट आउट इफ यू गेट सम एडिटोरियल्स ऑन यूट्यूब पे चेक करो. नहीं आया तो प्लीज ट्राई टू पिंग मी, आई ट्राई टू सेट अप अ पर्सनल मीटिंग. एक लिंक्डइन पे मुझे पिंग कर देना. Most important question, is CGPA important? Absolutely not. It is only important if you are applying it for on campus. अगर on campus apply करो then it is important, else CGPA is of no importance. मतलब अब ऐसा भी नहीं है कि हम लोगों ने 3-4 CGPA कर दिए. But I'll give you motivational fact that there's a friend of mine, there's a junior of mine who has who has a CGPA around 6 and he's in Google. So clearly, if you have good skills and if you have good skill set to show, trust me, this is not a very big deal. How much what is the language required to become full stack developer? I suppose if you start with Java and JavaScript, so it is going to help you both in front end and back end. Full stack hard, back end thoda hard hai, but not much. Khush Manglani is saying he's not able to be consistent because of his home renovations. I'm starting practice race again, so beginning. Absolutely, Khush. It's on to you. I mean, just try to solve as maximum problems as you can. Even this was a problem with me as well. I live in a joint family and there were a lot of people in my uh, family. So what I used to do is I used to wake up at nights and I used to practice that time. So just think about when you're comfortable. So that is it. Okay, she whosoever you are, he has a Google interview set up next month. Any tips for round one? So I'd suggest you to do contest, code forces contest every single day. My way of tip is two contests per day, in which you're going to do one virtual contest, in which you're going to spend your 1.5 hour time solving problems, 1.5 hour contest, plus 30 minutes to see editorials of the questions that you didn't solve, plus one live contest. अब जिस दिन ये लाइव कॉन्टेस्ट नहीं है, बिकॉज नॉट ऑल डेज देर इज अ लाइव कॉन्टेस्ट, सो मेक श्योर अगर तुम्हारा कोई लाइव कॉन्टेस्ट नहीं है तो उस टाइम पे क्या करना है, उस टाइम पे मेक श्योर दैट यू डू टू लाइव कॉन्टेस्ट. तो दो लाइव कॉन्टेस्ट करने हैं, दो कॉन्टेस्ट देने हमने. इफ देर इज नो लाइव, गिव टू वर्चुअल कॉन्टेस्ट. इफ देर इज वन लाइव, then give that one live contest and one virtual contest, and please make sure that you read editorials. Editorials reading is very important because जो क्वेश्चन तुमसे अभी नहीं हो रहे वो बाद में भी नहीं होंगे अगर तुम एडिटोरियल्स नहीं पढ़ोगे तो. सो दिस इज द टिप दैट आई वांट यू टू follow, and trust me, it is going to upskill yourself, upskill you. ये स्पेसिफिक नहीं है. So that was from my side, how to get into FAANG in Mang. And I hope ये जो प्लान ऑफ एक्शन है ये तुम लोग को समझ आ जाएगा. एंड प्लीज मेक श्योर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड मैंने इसका एक कोर्स बताया, सिस्टम डिजाइन प्राइमर. गो चेक इट आउट. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आजकल सिस्टम डिजाइन पढ़ना, बिकॉज इट इज बीइंग आस्क्ड. और अगर फॉर एग्जांपल इफ यू आर गुड एट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, तो तुम अपना इंटरव्यू को उधर डायरेक्ट भी कर सकते हो. दिस इज हाउ इट हेल्प्स. सो मेक श्योर दैट यू डू दीज ऑल स्टफ. ये प्लान ऑफ एक्शन अगर तुम्हारा रहेगा तो तुम्हारा जो है फैंग और मैंग, इट इज एब्सोल्युटली क्रैकेबल एंड इट इज नॉट मच हार्ड. बस मेक श्योर दैट यू बी ऑनेस्ट और तुम्हारा रिज्यूमे जो है दैट इज स्ट्रांग. Yeah, I hope I answered every person's question. So just let me know if there's anything that's left. Let me just answer a final question. You guys have 2 minutes to ask anything, and then I think we're gonna call off. Sashi, I think
Yeah, system designs mean high level design plus low level design both. Yeah. And whatever your name is, because Google focuses on scalability, try to see try to do a system design course where you learn in about scalability, how to make how to make a system scalable, how can we make a system scalable and distributed. So make sure that you work on these particular questions as well. Master directly after B.Tech is a bad choice. You rather gain some experience and then go for masters. All right. So that was it for today. And yeah, HTML is mandatory to know full stack. Sashi, C++ is better choice for placement because I told you C++ is fast. C++ has pointers and C++ has a lot of has a very good community support. That's why. So that's all from my side, and I hope तुम लोगों में से काफी लोग फैंग मैंग जाने वाले हैं. And please, if there's any kind of problem, please reach out to me on my LinkedIn. You guys can find me on LinkedIn by the name Naman Jain, and I'm from Punjab Engineering College, so it won't be a difficult task to find me and connect me over there. You guys can ask me any kind of things, any kind of question. I'll be happy to help related to programming or any other thing. For masters and BE, I think if you have 2 to 3 year experience, then it's good. So with that, bye bye. We'll meet in the next live, and make sure that you take care of your health and practice well. Bye, guys.